Hello, friends. Welcome to priceNpedia. Today we are going to analyze the indices, Nifty 50 index and Dow Jones. Other than that, we'll be also looking at the VIX. Besides these indices, we'll also look at some of the strong companies, strong stocks, which we can invest in the. दोस्तों आज हम देखेंगे विक्स क्या कर रहा है, इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। इसके अलावा हम हम ये भी देखेंगे कि ऐसे निफ्टी 50 के कौन से अच्छे स्टॉक्स है या एफएनओ के कौन से अच्छे स्टॉक्स है जहां पर हम आने वाले दिनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले इंडिया विक्स से। अगर इंडिया विक्स को हम देखें, इंडिया विक्स पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिया विक्स हमें क्या बताता है। विक्स हमें बताता है कि मार्केट में कमजोरी है या नहीं है। तो अगर विक्स का वैल्यू नीचे जा रहा है, अगर सपोज कीजिए विक्स नीचे है, तो समझिए इंडियन मार्केट जो है वो सिक्योर है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाले दिनों में नहीं हो सकती। लेकिन अगर विक्स ज्यादा है, हाई है, तो इससे इंडियन मार्केट्स में एक डाउनफॉल आ सकता है। तो अब अगर हम इंडियन विक्स को देखें तो यहाँ आप अच्छे से देखें इसको। ये देखिए इंडिया विक्स एक टाइम पे कितना ऊपर जा चुका था। दैट वाज ये कब हुआ था? ये मार्च 2020 में हुआ था, जब कोरोना के केसेस आए थे। तो यहाँ पर विक्स 76 लेवल तक पहुंच गया था और ये बहुत ही ज्यादा एक चिंता की बात थी। इट वाज नॉट अ गुड थिंग, राइट? सो after that, what happened was that India VIX started falling, and when India VIX started falling, it was a clear indication that our markets are getting more and more secured, और जो fear factor है वो बाहर आ रहा है। उसके बाद यहाँ विक्स ने एक बेस बनाई, बेस बनाने के बाद हल्का सा ऊपर गया लेकिन वापस नीचे जा रहा है। तो यहाँ विक्स का नीचे जाना इंडियन मार्केट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इट्स गुड थिंग दैट द विक्स इज गोइंग डाउन, बिकॉज इफ द विक्स इज डाउन, दैट मीन्स द डाउनफॉल इन निफ्टी लुक्स ए फार अवे साइट, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इंडियन मार्केट्स काफी सिक्योर लग रहे हैं क्योंकि विक्स लगातार नीचे जा रहा है। तो ये थी इंडिया विक्स की बात। आइए अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में आज के दिन क्या हो रहा है। तो अगर मैं निफ्टी का ये चार्ट खोलूं, मैं इसके डेली चार्ट पे जाता हूं, तो ये देखें। तो ये जो सेटअप है, आप सब लोग जानते होंगे कि हम काफी दिनों से इस सेटअप को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको ये पहले से समझा दूं, जो लोग मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं, जो जो लोग अभी अभी इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो उनके लिए मैं ये सेटअप फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ये सेटअप किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सारी कहानी शुरू हो जाती है 15,360 लेवल से। 15,360 जो था वो एक यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ और 15,360 एक रेजिस्टेंस बन के आया। यहाँ पर पहली बार इस रेजिस्टेंस ने हमें निफ्टी को नीचे की तरफ लिया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द निफ्टी वेंट डाउन वंस दिस रेजिस्टेंस वाज हिट। देन द सेकंड टाइम वाज हियर, थर्ड टाइम इट हैपेंड हियर, राइट? सो 15,360 लेवल्स जो थे, दे चैलेंज्ड द निफ्टी एंड ब्रॉट इट डाउन। Then what happened? Nifty formed a nice base और volatility जो थी वो डिक्रीज होती गई होती गई होती गई। ये देखे, जो आप ये शेप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा और फाइनली निफ्टी ने जो है इस लेवल को 15,360 की लेवल को यहाँ पर तोड़ दिया। और यहाँ पर तोड़ने के बाद वापस एक रीटेस्ट हुआ और उसके बाद 15,360 की लेवल जो थी वो एक सपोर्ट बन गई, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, जिसने निफ्टी को 4 बार नीचे की तरफ पुश किया था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद एक नई लेवल बन के आई जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गई। वो लेवल थी 15,912 की लेवल। तो ये 15,912 यानी कि 15,912 लेवल, इट बिकेम अ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। एंड इफ यू सी हाउ मेनी टाइम्स दिस लेवल हैज brought Nifty down. This has brought Nifty down here, this has brought Nifty down here, and this has brought Nifty down here. So 3 times Nifty could not sustain this 15,912 level, and then Nifty went down. This is the third time that the Nifty has been pushed down by this 15,912 level, right? Now the point is, what is the next target for Nifty? As far as the support of Nifty is concerned, अगर मैं यहाँ पर एक line draw करूँ, so this is an effective support for us, right? Look at this: once, twice, thrice,
4 times, 5 times. Here it was a false break. यहाँ पर एक false break हुआ था और देखिए निफ्टी किस तरीके से वापस इसी रेंज के अंदर आ गया और यहाँ पर देखिए फिर से एक बार निफ्टी नीचे गया लेकिन फिर से यहाँ पर एक पिन बार बन गया। तो ये जो लेवल है 15,600 की लेवल, दिस लेवल इज व्हाट यू कॉल द मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी एंड व्हाट इज द मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। निफ्टी की जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 15,900 की लेवल है। So this 15,600 is our support and 15,900 is our resistance. So if you see Nifty going down below 15,600 and sustaining there for some time, then there's a chance that Nifty can test 15,360 levels again. As far as 15,360 level is concerned, it is a major support for Nifty. एक बहुत बड़ा support है Nifty के लिए. इसके नीचे Nifty का जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो आपको अब क्या करना है, आपकी आपकी जो रणनीति है वो किस तरीके से होनी चाहिए। इसको पहले मैं जरा रब कर देता हूँ। तो आपका जो प्लान है वो किस तरीके से होना चाहिए। इधर मैं फिर से एक बार ये लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि 15,600 की लेवल कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर निफ्टी आपको नीचे जाता हुआ दिखे तो चांसेस है कि निफ्टी 15,360 तक जा सकता है, लेकिन अगर नीचे जाने के बाद वो वापस ऊपर आता है तो वहां आपको एक बाई की पोजीशन लेनी है और आपका टारगेट होना चाहिए 15,900। यू कैन इजीली मेक अराउंड 300 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। आप 300 पॉइंट निफ्टी में बड़े आराम से कमा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको ये नीचे जाता हुआ दिखा, इस सपोर्ट के नीचे जाता हुआ दिखा और अगर ये सस्टेन हुआ तो यहाँ पर आपको कोई बाई पोजीशन नहीं बनानी। लेकिन अगर 15,360 पे निफ्टी आता है तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी लेवल है जिसको तोड़ना निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप 15,360 के आसपास या 15,400 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है, यू शुड डेफिनेटली टेक अ बाय पोजीशन देयर एंड यू कैन राइड इट अप फॉर अ 600 पॉइंट मूव ऑन द अपसाइड। तो अभी निफ्टी जहां पर करंटली है यहां से करीब करीब मेरा ख्याल है 400 पॉइंट्स का मूव है ऊपर की तरफ जो आ सकता है। और अगर निफ्टी नीचे जाता है और 15,360 के 15,360 पे आता है तो वहां से हमें करीब करीब एक 600 पॉइंट 600 पॉइंट्स का मूव है। तो ऐसा तो वैसे लग नहीं रहा है कि निफ्टी इस रेजिस्टेंस 15 इस सपोर्ट 15,600 को तोड़ेगा। सो वी आर क्वाइट सिक्योर्ड हियर एंड आई थिंक 400 मूव इज डेफिनेटली ऑन फ्रॉम द करंट लेवल्स। So guys, what I'm trying to say here is that there are two levels which need to be watched out. Three levels in fact. First level is 15,360, which was a major resistance and it became a support. Then the second important level is 15,600 level, where Nifty has been getting support on a regular basis from last, I would say, 2 or 3 weeks, right? And then 15,900 is the other level where the Nifty has been getting resistance. So three levels are very important here: 15,360 level, 15,600 level, and 15,900 level. So right now Nifty is at 15,722, and it doesn't look like the Nifty will break this support of 15,600. So a move of 400 points is around 300 points to 400 points is completely on here. You can buy Nifty here, and your stop loss should be slightly below this red line. So that is scenario number one. Second scenario is if the Nifty goes below this red line and it sustains below this red line, then there's a chance that Nifty can hit 15,360 levels. But there's a very little chance that Nifty will break this 15,360 level. So you can take a buy entry at 15,360 level also. And the third scenario is whenever Nifty reaches 15,912, you will have to continuously watch it, very carefully watch it, because now there's a chance that Nifty can breach this level and it can overcome this resistance and it can cross it and it can go to the higher levels now. So these three levels should be very carefully watched, and you have to be very dynamic in your approach. You should understand the setup, you should understand the resistances and the supports, then only you should trade into Nifty. So I have given you all the possible scenarios here. Now it's up to you how you play Nifty from here on. Okay, I would suggest that you should watch the Dow Jones on Monday, and if Dow Jones is giving you a good what you call is giving you a good upside, showing you a good upside on Monday, then there's a chance that Nifty will not break this level and it will go up and it will give you those 400 points. We will be analyzing Dow Jones next now, so don't worry about that. We'll get an idea how Dow Jones is going to perform on Monday, and accordingly we can strategize ourselves. Okay.
So guys, this was the analysis of Nifty. Now let's go to the Bank Nifty and see what exactly is happening there on the Bank Nifty front. So guys, again, as far as Bank Nifty is concerned, there are three levels which are very important here. What are those three levels? Let's try to understand. So first level was this one, which is almost not in the picture now because 32,474 was the first resistance which Nifty faced, and then it overcame it. Then the second resistance became 31,400. Even Bank Nifty overcame that resistance, and now the current, I would say the most important resistance for Bank Nifty is this one. Let me just correct it. It's not correct actually. Let me just make a line here. So this is the value which is bothering us now. Now if I push it little down, so that level comes to around 35,780 levels. So 35,780 level is the resistance for Bank Nifty now. And how many times has Bank Nifty been challenged by this level? First it happened here. Let me just a second. First it happened here, and then next it happened here. So twice this 35,780 level challenged the Bank Nifty and it brought it down. Now where is Bank Nifty currently? Bank Nifty currently is at a very important support, and if I have to say how much is that support, that is 35,000, sorry, 34,500 levels. So 34,500 level is a very important support for Bank Nifty. And if you see, once Bank Nifty went down, it tried to breach this 34,100 level. It could not. See how the bulls came in and pushed the Bank Nifty back up. So there's a very little chance that Bank Nifty will go below this 34,100 levels. So looks like that we can easily enter at these current levels and ride into Bank Nifty. So we are 34,800 level here and 35,800 level here. So there's a clear 1,000 point move on the upside. So you can make 1,000 points in Bank Nifty from here on, and there's quite a chance that Bank Nifty will breach this 35,780 level and it will go beyond this, right? But you have to be very careful. If you see in the first hour that Bank Nifty has gone below this level, then don't take any position until Bank Nifty closes about this 34,600 level. So this 34,600 level is very critical. You have to watch it very carefully. This is the support number one for us, and the second support for us is 34,100, which also needs to be very carefully watched. तो दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि हमें दो लेवल्स का बहुत ध्यान रखना है, 34,100 का और 35,780 का हमें बहुत ध्यान रखना है. आप ये वाली लेवल और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर अभी करंटली है, दैट इज अराउंड 34,500. तो अगर आप देखिए ये 34,500 कितनी बार बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे चुका है. एक बार यहाँ पर दिया है, कई बार यहाँ पर दिया है, फिर से यहाँ पर एक वीक व्हाट यू कॉल दिस फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था, वापस बैंक निफ्टी ऊपर चला गया और यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि 34,600 जो है वो काफी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए. अगर मंडे के दिन आपको दिखता है कि डाउ जोन्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो काफी अच्छा चांस है. डाउ जोन्स जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अमेरिकन मार्केट. इफ डाउ जोन्स इज डूइंग वेल, देन इट विल प्रोपेल बैंक निफ्टी ऑल्सो, ऊपर ले जाएगा बैंक निफ्टी को. सो if Dow Jones is doing well on Monday, then you can be assured that you have a 1,000 move on here, and there's quite a probability that this time Bank Nifty will cross this major resistance of 35,780 levels. सो गाइज, ये है मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी का. जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको बड़ा डायनेमिक होना होगा. यू शुड हैव दीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इन योर माइंड, एंड बेस्ड ऑन देम you have to take a position in Nifty or in Bank Nifty. Don't trade blindly. Don't trade as if luck will play a role in your losses or profits. Luck has nothing to do with profits and losses. It's just your understanding of the instrument. It's the understanding of the support and resistance level which will ultimately play out and ultimately give you profit or give you a loss, God forbid. So carefully trade, and these are the levels for you. Now we have understood Nifty and we have understood Bank Nifty. Let's now go to the Dow Jones, which is a very important component here. This is Dow Jones for us, gentlemen. Let me first rub it off. Okay, this is the Dow Jones.
So look at this Dow Jones. Let me first do one thing. Let me first, yeah, here it is. So now, what are the two levels as far as Dow Jones is concerned? So the two levels for Dow Jones are 34,900, which was a very uh, important resistance for it. It brought it down many times. Here, first time it went down when it touched this 34,919. Second time it went down here, and now it's the third time which is it's approaching this resistance again. Now, guys, we have to be very careful here, because if Dow Jones doesn't sustain here and falls down, it will bring down our markets as well. So what we should be seeing here? We should be seeing a nice base formation here, a 4, 5, 6 candles here. And if that sort of consolidation happens here, then we can expect that Dow Jones will probably overcome this resistance and go up. But if that sort of consolidation doesn't happen here, and if we see a parabolic move on the upside, it's quite possible that parabolic move will not sustain, because we are seeing uh, it's like a parabolic move which is going up. So we might see that Dow Jones will not sustain on the upside; it will fall back down. So what we want to see here is that a nice consolidation. If that nice consolidation happens here, then Dow Jones will be secured and our markets will also be secured. As far as Nifty and Bank Nifty is concerned, they look quite secure. But again, it depends on Dow Jones, how Dow Jones performs. Then we can see upside. अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी तक हम उन्हीं पे डिपेंड हैं. तो अगर ये डाउ जोन्स अच्छा परफॉर्म यहाँ पर नहीं करता, तो हमारे इंडियन मार्केट्स भी नीचे आ सकते हैं. तो दोस्तों, एक बार फिर से हिंदी में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है. यहाँ पर दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 34,900 की लेवल और 33,600 की लेवल. इस लेवल को तो हम इग्नोर कर सकते हैं. हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट 34,900 की लेवल है. तो यहाँ पर आप देखें, पहली बार इसको यहाँ पर चैलेंज किया, नीचे आ गया, यहाँ पर चैलेंज किया, नीचे आ गया. अब फिर से हम इसी 34,900 की लेवल पे पहुंच चुके हैं. तो यहाँ पर हमें क्या दिखना चाहिए? यहाँ पर हमें एक अच्छी कंसोलिडेशन दिखनी चाहिए, 4, 5 कैंडल बनते हुए दिखने चाहिए, जिससे हमें ये जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अब डाउ जोन्स जो है वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ने को तैयार है. लेकिन अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं हुई और यहाँ पर ये सीधे ऊपर चला गया, तो फिर चांसेस है कि वो मूव सस्टेन नहीं होगा और डाउ जोन्स वापस नीचे आ जाएगा. तो अगर डाउ जोन्स वापस इन लेवल्स पे आता है, 33,600 की लेवल पे आता है, तो यकीन मानिए इससे हमारा इंडियन मार्केट जो है वो भी काफी नीचे आ सकता है. यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो 10 नंबर जो रेजिस्टेंस मैंने बताई है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्राइस ऊपर गया और किस तरीके से सिर्फ 2 कैंडल्स में प्राइस नीचे आ गया. तो कितना जबरदस्त फॉल था यहाँ पर. लेकिन 11 नंबर पे आप देखिए, जो ये फॉल था, इस फॉल को नीचे, इस डाउ जोन्स को नीचे आने में काफी वक्त लगा, राइट. तो मतलब सेलर्स इतने एक्टिव नहीं थे. यहाँ पर सेलर्स बहुत एक्टिव थे, यहाँ पर सेलर्स थोड़े कम एक्टिव हो गए क्योंकि काफी सारे दिन लगे इसको नीचे लाने में. यहाँ पर सिर्फ दो दिन लगे नीचे आने में, लेकिन यहाँ पर करीब करीब 10 दिन लगे हैं यहाँ पर इसको नीचे आने में. तो मैं नहीं समझता कि डाउ जोन्स यहाँ से इतनी जल्दी नीचे आएगा. अगर आना भी होगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू कम डाउन. सो दैट मीन्स देयर इज नो नेगेटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट. अगेन यू हैव टू वॉच हियर दैट कि यहाँ पर कोई ऐसा रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए जैसे कि यहाँ पर बना था, जिसकी वजह से सेंटिमेंट एकदम बिगड़ गया और डाउ जोन्स नीचे आ गया. आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि ये 3 कैंडल्स यहाँ पर बने, ये 3 कैंडल्स रेड कैंडल्स थे और बहुत ही, ये जो आखिरी का जो रेड कैंडल है, इसने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था कि लग रहा था कि ये 33,590 का जो सपोर्ट है ये टूट जाएगा. ऐसा रेड कैंडल क्यों बना? क्योंकि फेड ने जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनको वो एक्चुअली 2 या 3 साल के बाद बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लेटली ये कहा कि हम फेड ने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाएंगे, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर बढ़ाएंगे, और जिससे सेंटिमेंट पूरी तरह से बिगड़ गया. तो उससे हुआ क्या कि जो डॉलर था वो स्ट्रांग हो गया, और डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से जो था हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी इफेक्ट आ गया और यहाँ से डाउ जोन्स जो था वो नीचे फिसल गया. लेकिन यहाँ पर एक ट्वीजर बॉटम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना. इट्स नॉट एग्जैक्टली अ ट्वीजर बॉटम, बट इट इज समथिंग लाइक दैट, क्योंकि बुल्स ने जहां पर ये नीचे आया था वहां ही से लगभग प्राइस को वापस ऊपर लेके गए और सेंटिमेंट वापस जो था वो पॉजिटिव हो गया. इट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्वीजर बॉटम, इट्स सॉर्ट ऑफ अ bullish engulfing happening here, and that changed the sentiment again, and the sentiment became positive as far as Dow Jones is concerned. So guys, keep a close watch, a hawk's eye watch on this Dow Jones.
And based on Dow Jones, you have to trade Nifty and Bank Nifty, and hopefully you should do very well. So, guys, this was the analysis of indices. We analyzed the Indian VIX, we analyzed the Nifty, and we analyzed the Bank Nifty. Now, let's see if we can find some stocks in the FNO space, in the Nifty 50 space, and see if we can find some good attractive levels to trade these large cap stocks. So, guys, let's move on now. So, friends, let's analyze some of the blue chip stocks which are at good attractive levels and where we can see upside coming in the future. So, the first stock which I'm going to analyze with you guys is Hindustan Lever. If you look at Hindustan Lever, what exactly it is doing, it's like it's forming a cup and handle pattern. So, this was the cup, this was the first contraction which happened, and now this is the third contraction which is happening. You can say that it's a Mark Minervini pattern also. So wherein the volatility is continuously decreasing. So it's decreasing here, it's decreasing here. Now the stock is getting ready to negotiate this neckline, which is at 2500 levels. So I guess that we can make an entry here, and suppose I have to invest 100 rupees into this stock. I'll invest 30 rupees at these levels, right? And once the stock comes up and retests this resistance as support, then I can then I can use my remaining 70 rupees here. So we have to scale in and scale in very carefully as far as this stock is concerned. तो दोस्तों ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ये एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न दिखा रहा है. इसमें पहली वॉलेटिलिटी थी जो थी वो इस शेप में थी जो काफ़ी बड़ी थी. दूसरी वॉलेटिलिटी जो थी वो डिक्रीज हो गई, और अब जो तीसरी वॉलेटिलिटी पैटर्न है उसमें प्राइस फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते हैं. अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आप 70 रुपीज़ यहाँ 30 रुपीज़ यहाँ इन्वेस्ट करें, और उसके बाद जब स्टॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर आता है और यहाँ पर इसको रिटेस्ट करता है तो आप अपने बाकी के 70 रुपये या 70 रुपीज़ इन्वेस्ट करें और स्टॉक में एक थोड़ी लंबी अवधि के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो दिस वाज माय फर्स्ट स्टॉक, ये मेरा पहला स्टॉक था. अब हम चलते हैं टीसीएस की तरफ, जानने की कोशिश करते हैं कि टीसीएस में क्या हो रहा है. टीसीएस सेम पैटर्न, एब्सोल्युटली सेम पैटर्न. इसमें भी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. ये देखिए, पहला वॉलेटिलिटी पैटर्न काफ़ी बड़ा था, दूसरा वॉलेटिलिटी पैटर्न उससे छोटा हुआ, अब तीसरा उससे छोटा हुआ. अब यहाँ पर अगर आप इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर से कंपेयर करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी इस नेकलाइन के नीचे है, लेकिन इसने इस नेकलाइन को एक बार ऊपर की तरफ क्रॉस किया था. अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम्स भी ऐड कर दूँ तो फिर एक अच्छी पिक्चर आ जाएगी यहाँ पर. तो देखिए, यहाँ पर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा था ऊपर की तरफ, और उसके बाद प्राइस वापस नीचे आया, इसने इसको रिटेस्ट किया, और अभी यहाँ पर एक पिन बार बना है जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो हमें ये बताता है कि अब टीसीएस के अंदर एक अच्छा अपसाइड है. तो आई गेस वी कैन टेक अ पोजीशन इन टाटा कंसल्टेंसी हियर, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के थोड़ा नीचे होगा, करीब करीब 3265 लेवल्स पे वी कैन पुट अ स्टॉप लॉस एंड वी कैन एंटर इनटू टाटा कंसल्टेंसी. तो गाइस, दिस वाज स्टॉक नंबर 2. ये दूसरा स्टॉक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. अब उसके बाद एचडीएफसी पे चलते हैं. एचडीएफसी में देखते हैं क्या हो रहा है. तो एचडीएफसी में जो पैटर्न बन रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ अपवर्ड चैनल. सो दिस अपवर्ड चैनल, this became the high of the upward channel. It could not sustain that high. It came crashing down and it formed a triangle pattern, a volatility contraction pattern. So this volatility decreased in this big, what do you call this, in this big triangle pattern. And then the price came out of this triangle pattern. It went further into other volatility contraction pattern. It again formed a triangle here. So now this 24,500 level is important because this level has been tested once here. Let me just show it for you. So this has been tested once here, twice here, and thrice here, right? So this level is very important. You can keep a stop loss below 24,500 levels. So you can keep a stop loss at around say 23,375 levels, and just enter into this stock, and hopefully it will give a breakout in the upside direction. So our target should be on a near term basis around 2800 to 2900. Target can be reached, but the first target would be around 2700, which is this resistance. तो दोस्तों, एचडीएफसी में हम क्या देख रहे हैं? एचडीएफसी में हम देख रहे हैं कि जो प्राइस था वो एक अपवर्ड चैनल में था. ये प्राइस एक अपवर्ड चैनल में था. उसके बाद यहाँ पर इसने एक हाई बनाया. हाई बनाने के बाद प्राइस इस हाई को सस्टेन नहीं कर पाया और एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के अंदर चला गया.
यानी कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गई। वो ट्रायंगल फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, प्राइस को बार बार इन लेवल्स पे सपोर्ट मिल रहा था। ये लेवल्स मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सपोर्ट मिला और यहाँ पर सपोर्ट मिला, और प्राइस उसके बाद इस वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न से बाहर आ गया, और उसके बाद फिर से एक ट्रायंगुलर लो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के अंदर चला गया। यहाँ पर भी प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला, और फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला। तो ये 24,150 लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है HDFC के लिए। होपफुली ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस करीब 2375 के आसपास होना चाहिए। एंड यू कैन राइड HDFC फॉर अ मंथ और टू। तो इसमें टारगेट्स क्या होंगे, पहला टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस जो दैट इज 2640 लेवल की है। उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 2896, दैट मीन्स अराउंड 2900 दूसरा टारगेट होगा। तो ये दो टारगेट्स मैं समझता हूँ आने वाले 1 या 1.5 महीने में आराम से अचीव हो सकते हैं। डाउन साइड काफी लिमिटेड है स्टॉक के अंदर, और अप साइड काफी अच्छा है। सो दिस इज माय आई वुड से सेकंड स्टॉक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टॉक व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, व्हिच इज कोटक बैंक। तो दोस्तों कोटक बैंक क्या है, कोटक बैंक हैज बीन अ मेजर अंडर परफॉर्मर। ये देखिए इसने एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाया, इसमें से बाहर आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और देखिए लगातार नीचे जाने लगा। तो यहाँ पर कोटक बैंक एक ऐसा कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का जो अब बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये अपने एक मेजर सपोर्ट पे है, और ये सपोर्ट आप देखिए कितनी बार सस्टेन हुआ है। वंस हियर, सेकंड हियर, थर्ड हियर, फोर्थ टाइम हियर, and now it's the fifth time which it is sustaining. As you can see, it's pulling back. So you can make an entry in this stock as well. Your stop loss should be around 1685 or something like that, and ride on this what you call Kotak Bank पे आप ride कर सकते हैं। Your first target is around 1820 levels, and second target is around 2000 levels. So I guess Kotak Bank has a good upside. It's a fundamentally strong bank, very good company. This is just what you call a price action based fall. It has got nothing to do with fundamentals much. So you can make an entry at these levels, and there's a good upside in this stock. How much upside is there? Let's see. It's around 18% upside till this resistance, and around 8% upside till this resistance. So guys, Kotak Bank looks good, and I have explained you how you can enter into this stock. Now, the last stock, which is quite an important component of Nifty, that is Reliance. So, what is Reliance doing? Guys, Reliance का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। Reliance अगर गिरता है तो बहुत मुश्किलें हमारे लिए पैदा कर सकता है। तो Reliance is trading in a range. यहाँ पर ये देखिए, ये रेजिस्टेंस कितनी बार निफ्टी को हिट कर गई, यहाँ पर हिट कर गई, नीचे लेके गई, दूसरी बार यहाँ पर हिट कर गई, नीचे लेके गई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसके इस रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पाया, वो नीचे चला गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब रिलायंस इस नीचे की जो लाइन है, नीचे की जो ट्रेडिंग रेंज की जो नीचे की लाइन है, इसको टच नहीं कर किया, और यहाँ ही से आधे रास्ते से वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेंथ बताता है, और यहाँ देखिए किस तरीके से रिलायंस ऊपर गया है, और यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट था जो कि सस्टेन नहीं हो पाया, और रिलायंस वापस नीचे चला गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिलायंस ने यहाँ पर एक जबरदस्त बेस बनाया है, और वो बेस बना है 2080 लेवल्स पे। तो ये बेस बनना एक ऐसी साइन है कि अब रिलायंस स्टीम गैदर कर रहा है that it can break this resistance again, right? So there's a high probability that Reliance can come back and break this resistance again and move out of this trading range. So we can enter in Reliance, and our stop loss should be slightly below this 2080 level. It should be at around 2060 or 2050 levels, and I'm hoping that not hoping, actually this is just my analysis. We can't hope in stock market. Hope is a very bad thing when it comes to stock market. So as far as our analysis is concerned, our analysis clearly tells us that Reliance can move out of this trading range, and this time it can cross this resistance successfully. So guys, this was my analysis for this week, and hopefully I'll connect with you guys again next week. I have analyzed 4 stocks. I would say 1, 2, 3, 4, and 5 stocks, 5 blue chip stocks, and other than that, we have analyzed Nifty, Bank Nifty, VIX, and Dow Jones. So I wish you a very happy trading, and thanks for watching my video, and thanks for giving so much time to my video. Have a nice day. Bye bye. Until next time. Thank you.